triangles, we will study what are the different concept builders. Okay, we will study something called concept builders, in which we will build our concepts which are required to solve the problems. Okay, let me introduce myself. My name is Petiwala Muhammad Salman. I'm a mechanical engineer by my profession, and I'm going to deal with the concept builder part of this type of chapters, so that I can build up your concept so that you can get a good amount of knowledge to solve the problems which are going to be solved later in the DVD. Okay, so let us start with the concept of, or I can say first concept, that is the concept of similar figures. Now, what do you mean by this word similar figures? Similar figures are nothing but those figures which have the same shape. Okay, similar figures are figures which have the same shape. For example, let me give you an example of a similar figure. If I draw a circle like this, okay, and if I draw a circle like this of two different sizes, I can say that this figure is similar to this figure. Clear? These two are, I can say, similar figures. Let me give you an example of a square. This is a square, let's say, and this is another square. Now I can say both these figures are similar. Why? Because both of them have a same shape. Okay. Now let me draw a triangle, or let me draw an equilateral triangle. This is one equilateral triangle and this is the other equilateral triangle, and I can say that these two equilateral triangles are similar. Why? Because of the fact that they have the same shape. Okay, hence I can say similar figures are those figures which have the same shape. Okay, similar figures are figures which have same shape. Clear with this? Which have the same shape. Circle is similar to this is similar to this is similar to this. Okay, you cannot say your circle is similar to triangle. Okay, you cannot say. Why? Because the shape is different. You cannot say your circle is similar to square. Why? Because this has different shapes, right? Hence I can say the two things which have same shape, or I can say similar shape, are called similar figures. Understood? What do you mean by similar figures? This was the first concept. Let us go on to the second concept. I will write down the concept, then I'll explain you the concept. Okay, the second concept is, it is basically a statement which is a base of this chapter, triangle. Triangle को study करने के लिए ये basic statement हमें हमेशा याद होना चाहिए, जो मैं अब लिखने जा रहा हूँ. This statement is, all congruent figures are similar, but similar shapes are not congruent. All congruent shapes are similar, but all similar shapes are not congruent. What do you mean by this word congruent? Congruent का मतलब होता है same size, right? Congruent का मतलब होता है same size. For example, I may tell you that I have one circle like this, which has a radius of 3 centimeter, okay? And I have another circle like this, which also has a radius of 3 centimeter. So I can say this green circle is congruent to the red circle. Why? Because they have the same radius. Okay, I can just write it out there. These circles are congruent. Why they are congruent? Because they have same radius. What? Clear? Or I can say they have the same radii. तो अगर same radii होता है तो मैं कह सकता हूं दोनों circle क्या है, congruent है. This is true. Okay? अच्छा, इसको मैं और अच्छे से कहूं या पहले कहूं कि ये congruent है, तो अब ये दोनों, ये congruent भी है as well as ये similar भी है. समझ में आया? ये congruent भी है और similar भी है. क्यों similar है? क्योंकि दोनों का shape क्या है, same है.
Hence I can say these two triangles these two circles are congruent and similar. कॉन्ग्रुएंट क्यों? क्योंकि रेडियाई सेम है. सिमिलर क्यों? क्योंकि शेप सेम है. ठीक है. लेट मी टेक अनदर एग्जांपल टू प्रूव दिस आउट. लेट अस टेक अ सर्कल ऑफ 3 centimeter and let us take a circle of 5 centimeter. Okay, now I have two circles. Now can I say both these two circles have the same shape? Yes, I can say both of them have the same shape. Hence I can say these two circles are similar. मैं लिख सकता हूं, मैं लिख के दिखाता हूं. These two circles are similar. But can I say these two circles as congruent? No, I cannot say these two circles as congruent. Hence I can say they are similar but not congruent. But not congruent. Hence I can say all congruent shapes are similar but all similar shapes are not congruent. All similar shapes might be congruent or might not be congruent. समझ में आ गया? मतलब सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो जो congruent है ना उसे similar होना ही है. ठीक है. जो congruent है उसे similar होना ही है, पर जो सिमिलर है वो जरूरी नहीं कि वो कॉन्ग्रुएंट भी हो. क्लियर हो गया कंसेप्ट? हर सिमिलर शेप कॉन्ग्रुएंट होना जरूरी नहीं होता. ओके, लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल. टेल मी, आई हैव वन स्क्वायर लाइक दिस ऑफ साइड 2 centimeter and another square let us say of side 3 centimeter. okay, square के बारे में हमें पता है, all the sides then become 3 centimeter, all the sides are 2 centimeter. now these two have similar shapes, right? मैं कह सकता हूं दोनों का शेप क्या है? सेम है. hence I can say these two squares are similar. But are these two squares congruent? No, these two squares are not congruent because they have different sizes. okay, hence I can say they are similar but not congruent. Hence I can say कि जो similar होता है वो जरूरी नहीं कि वो congruent हो, पर जो congruent होगा उसके लिए जरूरी है कि वो क्या होगा? सिमिलर होगा. समझ में आ गया? उसके लिए जरूरी है कि वो क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा. ओके, सो ऑल congruent shapes are similar but similar shapes, all similar shapes are not congruent. Some may be congruent but all of them are not congruent. okay, so this is the second concept which you need to remember, and hope your concept about what is congruent and what is similar is clear. okay, समझ में आ गया ना? similar कौन सा होता है? मैं ब्रीफ अप कर दूं. सिमिलर क्या होता है? जिसका शेप सेम हो. ठीक है, जिसका शेप सेम हो. कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? जिसका साइज सेम हो. ओके, आई विल जस्ट राइट इट आउट as a part of the last thing, conclusion. Similar means same shape, conclusion, and congruent means same size. Clear? Understood the difference between similar and congruent? okay, so please make a note of this. Now friends, let us move on to certain laws of your similarity, which gives you certain amount of relation of what is occurring in case of your similarity of certain type of shapes. Like for example, in this particular case, we will study the similarity of a polygon, right? Now you know what is a polygon. Polygon is nothing but it is a more than 3-sided figure is called a polygon, right? Triangle, quadrilateral, square, pentagon, hexagon, all are nothing but your polygons, right? Acha, we know 3-sided polygon is your triangle, 4-sided polygon is your quadrilateral, 5-sided polygon is your pentagon, right? And 6-sided polygon is your hexagon. तो अब पॉलीगॉन के केस में सिमिलैरिटी किस तरह से अप्लाई होती है? दिस रूल गिव्स अस एन आइडिया ओवर इट. ओके, लेट अस रीड दिस रूल. Two polygons of the same sides, okay, two polygons of the same sides are similar if their correspondent angles are equal. Point number 2, their corresponding sides are proportional. Now what do I mean by this? दो polygons of the same number of sides. okay, इसका भी 5 साइड है, 1 2 3 4 5, इसका भी 5 साइड है, 1 2 3 4 साइड्स. नाउ मैं इन दोनों को सिमिलर कब कह सकता हूं? दो कंडीशन में इन दोनों को सिमिलर कह सकता हूं. किसे? मैं अपने
पॉलीगॉन्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। मैंने अपना पहले सर्कल्स को सिमिलर कहा था क्योंकि उनका क्या सेम था, शेप सेम था, राइट। सर्कल्स आर ऑलवेज सिमिलर, राइट। हेंस आई कैन से सर्कल्स आर ऑलवेज सिमिलर, स्क्वायर इज ऑलवेज सिमिलर एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल इज ऑलवेज सिमिलर। ये तीनों हमेशा सिमिलर ही रहेंगे। पर पॉलीगॉन्स की बात करूं तो पॉलीगॉन्स कभी कभी सिमिलर होते हैं और कभी कभी सिमिलर नहीं होते, ओके। सो व्हाट इज द कंडीशन फॉर पॉलीगॉन? द फर्स्ट कंडीशन फॉर पॉलीगॉन टू बी सिमिलर इज देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दिस? अगर मैं कहूं कि लेट अस से दिस पॉलीगॉन, लेट अस गिव अ नेम ए बी सी डी ई, and let us give this also a name P Q R T, okay. So these are your two polygons, or I can say 5-figure polygons or your pentagons. Hence I can say these two pentagons are A B C D D, A B C D E and P Q R S T, okay. अच्छा, अब मैं कह सकता हूं अगर ये दो पॉलीगॉन्स अगर क्या है, सिमिलर है, तो इनका क्या दो कंडीशंस इनके लिए अराइव होती है, ठीक है। अगर मैं कहता हूं इफ polygon, I can say like this, polygon P Q R S T and polygon A B C D E, or I can say pentagon, okay, are similar, then अगर दोनों सिमिलर होते हैं then the angles, or I can say corresponding angles are equal, okay. corresponding angles are equal मतलब ये दोनों मुझे क्या लग रहा है, सिमिलर लग रहा है। मतलब A के corresponding कौन सा एंगल है हमें देख के पता चल रहा है P, okay. B के corresponding एंगल Q है, R के corresponding C है, S के corresponding D है और E के corresponding T है, okay. Hence I can say that this angle is equals to this angles, okay. अच्छा, similarly I can say this angle is same as this angle. Let me use different pens. This angle is equals to this angle, okay. Further I can say this angle is equals to this angle, and I can further write this angle is equals to this angle, okay. Hence your angles, or I can say if the polygons are similar, your angles are, or your corresponding angles are equal. So I can write your angle A equals to angle P, angle B equals to angle Q, angle C equals to angle R, angle D equals to angle S, angle E equals to angle T. समझ में आ गया? तो इस तरह से मैं कह सकता हूं कि अगर दोनों सिमिलर है तो क्या होना चाहिए, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ओके. करस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी इक्वल. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. द सेकंड कंडीशन स्टेट्स दैट their corresponding sides are proportional, okay. Their corresponding sides are proportional. Sides proportional, what do you mean by this word proportional? Proportional का मतलब होता है equal ratio, ठीक है. Proportional का मतलब होता है equal ratio. Corresponding sides proportional मतलब if I take a ratio of this to this, okay, similar देखो, ये this is proportional to this is proportional to this, okay. 4 लाइन से इसे रिप्रेजेंट करता हूं. दिस इज प्रोपोर्शनल टू दिस, दिस इज प्रोपोर्शनल टू दिस. क्लियर विद दिस? समझ में आए कौन किससे प्रोपोर्शनल है? प्रोपोर्शनल का मतलब इक्वल रेशियो. इसका क्या मतलब है? योर ए ई इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन पी टी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू is equals to your BC upon QR, okay. This is equals to your CD upon RS is equals to your DE upon ST, okay. Clear? Hence इसका मतलब होता है, ये स्टेटमेंट का मतलब होता है all the sides of the particular polygon are proportional. Proportional मतलब सबका अगर रेशियो निकालूंगा this upon this, this upon this और this upon this, तो क्या आएगा? रेशियो सबका सेम आएगा, okay. Let us take an example so that it can clear up your ideas. I can just say let this be 1 centimeter, let this be 1.5 centimeter, let this be 2 centimeter, let this be 2.5 centimeter,
लेट दिस बी 3 सेंटीमीटर, ठीक है, लग तो नहीं रहा है पर हम एग्जाम्पल के तौर पर इसे ले सकते हैं, ओके। हेंस दिस विल बी नाउ लेट अस से 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर and this let us say it is your 6 centimeter, okay. Now let us compare. AE क्या मिला है 1 सेंटीमीटर, सब्स्टिट्यूट करता हूं 1 सेंटीमीटर अपॉन TP, ओके, या PT जो भी है, 2 is equals to I can say your AB, right? AB क्या है 1.5 है, hence this is 1.5 upon PQ, PQ is 3, okay, is equals to, okay, is equals to what? Your BC, BC is written 2 centimeter, so I'll write 2 centimeter, okay, upon QR, QR is 4 centimeter, again CD, CD is how much 2.5 centimeter upon RS, RS is how much, RS is 5 centimeter, सेंटीमीटर नहीं रखता हूं सिर्फ 5 लिखता हूं, okay, is equals to DE, DE is 3 centimeter and your TS is how much 6 सेंटीमीटर, ओके। नाउ ये रेशोज जो अब तक मैंने निकाले हैं ये कुछ सेम तो लग नहीं रहे, ओके, पर इन्हें कैंसिल आउट करूंगा ना तो ये सेम लगने लगेंगे, ओके। आई कैन से दिस इज 1 टाइम्स, दिस इज 2 टाइम्स, ये 2 का टेबल 1 जा, दिस इज 2 जा, दिस इज 1 जा, दिस इज 2 जा, दिस इज 1 जा, दिस इज 2 जा। नाउ दे आर लुकिंग सेम, ओके। Hence I can say from here that they are proportional. अब समझ में आया proportional का मतलब क्या होता है? Proportional का मतलब होता है equal ratio, समझ में आ गया ना? भले इनकी साइज अलग अलग हो, ठीक है, 1 की जगह पे यहाँ 2 है या 1.5 की जगह 3 है, पर इनका जो रेशो निकल आता है वो क्या आता है, सेम आता है, सबका रेशो आया हाफ। Hence I can say the sides are proportional. समझ में आ गया कंसेप्ट?